Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study the first chapter of Class 9 Science, Matter in Our Surroundings. So let's start the chapter. First, let us see what is matter. So everything in the universe, everything in the universe is made up of certain materials, whether it is living things or non-living things. They all are made up of certain materials, and this material is known as matter. This material is known as matter. For example, if we talk about air which we breathe, food which we eat, stone, plastic, whatever the things we found in our universe, all are known as matter. Now, how will define the matter? Everything is the matter. Everything is made up of the certain material, whether it's air, food, stone, plastic. ये सभी चीजें जो हैं वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई हैं और उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मैटर इज एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग एनीथिंग which occupy occupy space and has mass. The definition of a matter, it means कि वो कोई भी चीज, anything, वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह को घेरती है और जिसका मास होता है, इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट इज वेट। वो कोई भी चीज जिसका वजन होता है, जिसके अंदर मास होता है, वो मैटर कहलाता है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनीथिंग which has volume and mass, and mass is known as matter. So this is the definition of matter, यानी कि वो कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसके अंदर मास होता है वो मैटर कहलाता है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम इसमें से कोई भी चीज ले लें, चाहे हम एयर, फूड, स्टोन, प्लास्टिक, if you talk about anything, they all have mass and they all occupy the space. अगर हम इस रूम की बात करें तो रूम के अंदर एयर होता है, इट मींस इट ऑक्यूपाई ऑल द वैकेंट स्पेस व्हिच इज देयर इन द रूम। अगर हम इस पेन की बात करें व्हिच इज सॉलिड सॉलिड है, मैटर है, और अगर मैं इसको कहीं पे भी प्लेस करता हूं तो ये उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। सो दिस इज अ मैटर, और इसके अंदर मास भी है, वजन भी है, हर चीज है। तो वो कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जो हमारे सराउंडिंग में है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट सराउंड अस इज मैटर। तो वो मैटर है। और मैटर क्या नहीं है? मैटर वो चीज नहीं है जिसके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। ये चीज मीन्स कि which doesn't occupy space and doesn't have mass. Like if you talk about the thought, our thought, तो हमारा जो थॉट है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है और ना ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। It doesn't have any mass, it doesn't have any volume, so it is not a matter. If you talk about the light doesn't occupy space and doesn't have mass, that's why light is also not a matter. So there are certain things which doesn't come under the matter, but almost 99% if you talk about, they comes under the matter. They are made up of the certain things and that things is known as matter. तो ये था मैटर का इंट्रोडक्शन। इफ यू गो इन द हिस्ट्री, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अर्लियर साइंटिस्ट, जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को डिफाइन किया एज अ पंच तत्व के रूप में। दे डिफाइंड everything which is found in the universe is made up of पंच तत्व। and what are that पंच तत्व? तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को डिफाइन किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पंच तत्व। नाउ व्हाट आर दैट फाइव थिंग्स
that they called the Panch Tattva. They are air, water, earth. The fourth one is sky, and the last one, fifth one is fire. So this all five things grouped together, they called as Panch Tattva. So earlier, Indian philosopher classified matter or they defined the matter on the basis of the Panch Tattva, and they said that all the matter is made up of these five things, and these five things are air, water, earth, sky, and fire, and these five things are called the Panch Tattva. So modern scientists have described matter on the basis of their physical property and their chemical property. So the chemical property we will study in the next chapter, atoms and molecules. In this chapter, we will study about the physical property. So before going to the physical property, let us revise what we know about the matter in our previous classes which we had studied in class 7th or 8th class. So one by one we will revise it, and after that we will come to the physical property of the matter. So let's revise. So मैटर को बेसिकली तीन फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है. मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड and third one is gas. So basically whatever the substance which is found in our surrounding, they are found in only these three form: solid, liquid और gas. तो इन्हीं तीन फॉर्म में पाए जाते हैं. और हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि which one is solid, which one is liquid and which one is gas. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को डिफाइन करने से पहले हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Solid की बात करें, if we talk about the solid, then in the solid the molecules are arranged in this manner. They are compactly packed. Compactly packed का मतलब है कि they don't have the space between the molecules. All the matters are made up of this small molecules. So this is the structure of solid. This is the structure of solid and how the molecules are arranged inside the solid. If we talk about the liquid, then the structure of the liquid is like this. The molecules are arranged in this manner. There is a small gaps as compared to the solid. There is gap between the molecules. This is the structure of liquid. And if we talk about the gas, then the molecules are far away from each other and there are very minute or very less molecules will find in the. So these are the three structural representation of solid, liquid and gas. And if we talk about the matter, so all the matters are made up of these molecules and the space. If you talk about this solid, there is no space between the molecules. If you talk about the liquid, then there is a space. And if you talk about the gas, there is a huge space or very big difference between one position and other position, molecular positions. So these spaces are known as intermolecular space. What is the intermolecular space? What is intermolecular space? The space between between the between the two molecules. Two molecules are known as intermolecular space. Intermolecular space. Intermolecular space. So on the basis of intermolecular space or the molecular arrangement in solid, liquid and gas, we can easily describe the matter and form of the matter, whether it is solid, liquid and gas. So let us describe one by one. तो पहले describe करते हैं solid को. Solid. So solid has fixed shape
फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम अगर पूछता है डिफाइन द सॉलिड, तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड हैज द फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इन ऑल द कंडीशन। ऑल द कंडीशन मींस व्हाट? अगर कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल दिस मार्कर है या फिर स्टोन है या फिर और कोई कोई भी चीज हो, और उसको हम किसी भी प्लेस पे उसको हम रखें, इफ वी कीप इट everywhere or anywhere, so what will happen? Its shape will not change, volume will not change, it will occupy the same space, so that is why it is the solid. तो ये क्यों होता है? Because of its molecular arrangement and the intermolecular space. क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से नजदीक में होते हैं, they are compactly packed, they are very close to each other, then the force of attraction between the molecule is higher. सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि ये नजदीक नजदीक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि दो फ्रेंड हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हाट विल हैपन? द फोर्स ऑफ attraction between them, force of attraction means what? Emotional attachment between them is very high as compared to the other friend, if you talk about inside the class. So like that same in the case of solid also, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के एकदम नजदीक हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो क्या होता है उनको हम कहीं पे भी रखते हैं तो उसी शेप में होते हैं, दे डोंट गो अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर नहीं भागते हैं। So that's why their shape will remain same in any circumstances, in any situation. So that's why solid has fixed shape and fixed volume. The shape of solid will also change. That is the another condition. We will study in this chapter how the solid will become liquid, liquid will become gas. So we will study further in this chapter. तो पिछले क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में कि सॉलिड हैज द फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर arrangement and the intermolecular space between them. So this is the definition of solid. Solid has the fixed shape and fixed volume. If we talk about the liquid, if we talk about the liquid, then liquid has fixed volume, but don't has fixed shape. लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है ग्लास में, so if I'll keep that 1 liter water in a glass, so what will happen? It occupy the space between the glass and its shape will become like a glass. ग्लास के शेप के जैसा उसका शेप हो जाएगा एंड वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर मैं उसी पानी को ग्लास वाले वाटर को इफ आई ट्रांसफर इनटू द अनदर कंटेनर, अगर मैं उसको दूसरे कंटेनर में pour करता हूं, so what will happen? It will take the shape of that container. It means what? Its shape is not fixed, its shape will change according to the situation. मतलब मैं जिस कंटेनर में रखूंगा वो उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, शेप ले लेगा, बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ग्लास में भी पानी 1 लीटर था, जब मैंने उसको ट्रांसफर किया अनदर कंटेनर में, तो क्या हुआ? वहां पे भी पानी जो है, जो वॉल्यूम है सेम है, 1 लीटर ही है, लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज होता है। और वो चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि इनके बीच में जो है स्पेस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, they don't have that much strong emotional attachment। अगर हम बात करें फ्रेंड का एग्जांपल लें तो उतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होता है दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, तो ये क्या होते हैं, ये उनसे दूर जाते हैं धीरे धीरे। तो दैट्स व्हाई ये जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। दैट्स व्हाई देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड, देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज गैस। अगर हम गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? गैस don't have fixed volume and shape। गैस के केस में क्या है कि गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव द
very big intermolecular space or large intermolecular space as compared to the water. So what will happen here, the force of attraction is very less, or we can say it nil. There is no force of attraction, no emotional attachment. So what will happen, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है highly expandable होते हैं. अगर हम इनको कहीं पे भी रखें, so they start expanding, expand होने लगते हैं, फैलने लगते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पीछे force of attraction नहीं है. तो force of attraction नहीं है तो ये एक दूसरे के नजदीक नहीं होंगे, दूर जाएंगे. दूर जाने की वजह से क्या होता है, ये expand होते हैं. They are highly expandable, and that's why they don't have the fixed volume. इनका volume तो fix होता ही नहीं है, shape भी fix नहीं होता. It means कि if we keep air in any container, it will occupy the shape of that container, or it will occupy all the space between that container, inside that container. So this is the definition of solid, liquid and gas. And there are other component also on the basis of which we can differentiate the solid, liquid and gas. So let us see one by one. If we talk about the solid, liquid and gas, so they are the components on which we differentiate solid, liquid and gas. So let us see one by one. First one is the shape. Second one is volume. Third one is density. Fourth one is intermolecular space. Intermolecular space. And fourth one is force of attraction. Force of attraction. So if we talk about the shape, then in the case of solid, shape is fixed. सॉलिड में शेप फिक्स्ड होता है. अगर हम लिक्विड की बात करें तो शेप इज नॉट फिक्स्ड. Shape is not fixed. And if we talk about the gas, shape is not fixed. Not fixed. If we talk about the volume, in the case of solid, volume is fixed. If we talk about the liquid, volume is fixed. If we talk about the gas, it is not fixed. It will change according to the situation where we kept it. What about the density? If we talk about the density, so what is density? Density means mass by volume. It means in a given volume it may be 1 cubic centimeter, 1 cubic meter, whatever it is. So in a fixed volume, what is the mass of that particular matter, whether it is solid, liquid or gas, and what are the things which determine the mass of it? That determined by the molecules, how many molecules it contains in a particular volume or in a given volume, that will determine the density of a particular matter. तो अगर हम इसमें बात करें सॉलिड लिक्विड गैस में, तो अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, सपोज फिक्स्ड वॉल्यूम ले लें, ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, और एनीथिंग फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं. तो 1 मीटर क्यूब में अगर हम डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो सॉलिड के केस में मैक्सिमम है. डेंसिटी मींस व्हाट, कि कितने मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हैं. तो सॉलिड में मैक्सिमम है, उससे कम लिक्विड में है, उससे कम गैसेस में है. तो अगर हम बात करें डेंसिटी की तो क्या होगा, डेंसिटी सॉलिड की बात करें तो डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसमें लेस होगा और इसमें वेरी लेस होगा. वेरी लेस बहुत ही कम होगा डेंसिटी. इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में क्या है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एकदम नहीं है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, तो हम उसको कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. सॉलिड के केस में क्या है, जीरो, निल. और वेरी लेस होता है, बहुत ही कम होता है, उसको निल से दिखाते हैं.
अगर हम लिक्विड की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड, देन द intermolecular space in the liquid is high, as compared to the solid. हम solid से compare करें तो यहाँ पे high है, and if you compare with the gas, then the intermolecular space is very high, बहुत ही ज्यादा होता है, and that's why gas is highly expandable as compared to the water. तो ये intermolecular space है. And the last one is the force of attraction. Force of attraction in between what? In between the molecules. तो force of attraction अगर हम solid की बात करें तो solid में जो force of attraction between the molecule है ये बहुत ही ज्यादा होता है, very high. Why? Because the molecules are very close to each other. That's why the force of attraction between the molecules is very high. When we talk about the liquid, the force of attraction is less as compared to the solid, and when we talk about the gas, the force of attraction is very less. तो ये सारी चीजें जो हैं अबाउट द सॉलिड, लिक्विड और गैस, अबाउट द मैटर, हमने पहले के क्लास में 7th और 8th में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो ये हमने एक बार रिवाइज कर लिया है. अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं और किसके बेसिस पे वर्क करती हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे. तो ये था आज का टॉपिक. आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में.